गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार भी हमारा ऑडियो टेस्ट जो था वो 2-3 बार फेल हुआ था, तो इसलिए एक ऑडियो टेस्ट कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे सुन पा रहा है तो कृपया जवाब में मैसेज बॉक्स में लिखे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। यस, तो सुमित, थैंक यू वेरी मच फॉर द कंफर्मेशन। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो पहला सेशन जो हमने कल किया था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। कल के 260 पीपल ज्वाइंड द यूट्यूब लाइव। 260 लोगों ने ज्वाइन किया एंड अब तक करीब 881 लोगों ने वह वीडियो जो उसका यूट्यूब का था, यूट्यूब लाइव का, वो अब तक देखा है। आज की मीटिंग हम सीधा शुरू करते हैं और जो सवाल कुछ लोगों ने पहले ही लिख दिए हैं उनसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो राजा कुमारा का है एंड his question is that I am Raghu from Bangalore, acquitted in 498A as hostile by wife, filed one more 498A by wife, yet no charge sheet from police. Can I file quash in High Court for it, or shall I wait till charge sheet is filed from police? Will I win this? Now it seems, Raghu, that you had brought your wife back when she turned hostile and closed the 498A, which resulted in your acquittal. But as per my experience, such marriages don't work mostly. So in your case also, the wife has once again filed a 498A case, which is causing you great distress. Can you go to High Court solely on this ground that there was a previous 498 in which you have gained acquittal? That could be little far-fetched. You should check with a competent lawyer about your FIR and see whether any other ground for moving to High Court is made out or not made out. And then you should proceed further. Nikhil has written a question. His question is, he's from Odisha, and his question is that he is a government employee. He married in 2015, no child. Wife is BTech. Wife left house in 2017, filed 125 in 2018. No other case, fighting for interim till now. Advise on steps for filing divorce and other steps. Uh, Nikhil, as I can see from whatever details you have given, that there is only one case on you, that is a case of 125 in which the now रही बात कि आपको विजिटेशन मिल सकता है, बिल्कुल, पर ये लिमिटेड टाइम, लिमिटेड ड्यूरेशन का विजिटेशन आपको मिलेगा इस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। बच्ची जब गई थी तो वो लगभग 2 साल की थी, अब शायद आपको पहचानती भी ना हो। तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट जो भी विजिटेशन ग्रांट करेगा वो काफ़ी लिमिटेड ड्यूरेशन का होगा। फिर भी अगर आपको विजिटेशन चाहिए तो वो HMA, डोमेस्टिक वायलेंस या गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अंतर्गत केस के अंदर ही लिया जा सकता है। अगर HMA का कोई केस नहीं चल रहा है तो 498 और मेंटेनेंस के केस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको बच्चे का विजिटेशन मिले। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली एक गार्जियन एंड वार्ड एक्ट का मुकदमा दायर करना पड़ेगा जिसमें आपको विजिटेशन मिल सकता है। सुरेश जोशी ने आगे ही लिखा है, मेरी बेटी को मेरा नाम भी नहीं पता है, सब बुला दिया उन लोगों ने, प्लीज गाइड मी। मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ, मेरी ससुराल झालवाड़ राजस्थान में है, मुझे केस कौन सा करना है? ये केस मैंने आपको बता दी है, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट का केस होगा और ये आपको झालावाड़ राजस्थान में ही करना पड़ेगा और कहीं नहीं कर सकते। निखिल दास, जिन्होंने who is from Odisha, he had asked his question before. He has added more facts that he is trying to convince her to come back since 2 years. No luck. How to get divorce and what precaution to take for self and family. What are the chances of for wife filing for 90 and DV after I file divorce and merits of her case? See, Nikhil, I have already told you that whatever limited facts you have provided to me, I have based my opinion on that only. Of course, giving opinion on very brief facts is
uh, somewhat dangerous also. But whatever facts you have given me, if she has filed a 125 case and there are no allegations of dowry or domestic violence in that, then the chances that she'll succeed in filing 498 and DV is bleak. However, there is no limitation in both these cases and she can still file these cases. But then you will have to see, unless a person sees her 125 petition, nobody can say with any force whether her 498A case and DV case will succeed or not. And as I have already said that for divorce, you have valid ground for filing divorce on the grounds of desertion as well as cruelty if it is made out. Uh, Darsh Yadav has asked a question. Hi sir, I am Darsh. My wife with plan and just setting by a bribe got order of maintenance in her favor of 30K per month or just estimated salary without any proof. Judge forced to pay old arrear. Thus, if there is a order which is illegal against you, you should have gone for appeal. And unless you have gone for appeal, the said order is binding order, and you will have to pay all the arrears. Whether this order is legal or illegal order, that is beyond the point. If there is any order and you don't comply with it, there can be consequences. So if you are not happy with any order, the only way out is that you have to go in for appeal. You cannot just keep on sitting with that order. Uh, Thank you, Prem. Prem has paid a compliment. He has asked a question: are family courts in Delhi working during this lockdown? No, family courts are not working in this lockdown period. Even none of the courts are working. Only urgent matters are being heard, and matter related to bail and stay on proceedings, stay or injunction. If it is very urgent, only those are being heard. Otherwise, matters are not being heard in Delhi courts. Uh, However, how effective they are, it depends upon the nature and nature of the property and the time when you have gifted. Because if you have gifted something when there is a court case pending against you, or that particular property is a matter of less, that is case is pending against pertaining to that particular property, then such gifts are invalid gifts, and it can be the court can invalidate the gift deed. I the case, then you should sit with someone. I think I have been, yeah. I think there was some blip in the connection. There was a highlight which said that connection is unstable, but now I think you are able to hear me. So I was telling you that gift, you should sit Yamla Pagla, the person whose screen name is Yamla Pagla. There are people who are working both in finance as well as legal field. So you should sit with somebody who has expertise in that domain to ascertain whether you should gift any assets at all, and if yes, by which mode and to whom. Saurabh Arora has asked a question that my wife has put 377 allegations against me and 354 allegations against my brother in CAW cell complaint. If FIR get registered, will 41 in notice served or police will arrest me and my brother directly? Saurabh Arora ji, in such cases, I need to prepare cross of that girl, or coming date other affidavit or the witness will be submitted. If she has submitted her affidavit, after that other witnesses will be cross-examined. How many dates for cross? You should try to wind up the cross as soon as possible. In person, no matter how confident he is, if he or she is lying and the situation in the court is so that they are unable to hold the facade for a pretty long time, so it is impact their affidavits. Omkar Singh has asked, please discuss 125 cross-examination techniques. Omkar ji, this question is not very clear because every case is different. We'll try to cover. I have an article which is
written by Hardik, and it is available on my website. You should go through it. It is a quite a lengthy article, and it has techniques for various cases and various points. Still, it is not an exhaustive document. It is a very good beginner document. So you should go through it, and then if you have any specific query, you can ask in any further meeting, or try to answer that. विश्वदीप सिंह, जिनका केस यूपी में है, उन्होंने लिखा है 498 307 का केस है उनके ऊपर। उनके लड़की के पास कोई फेक मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल डॉक्यूमेंट है, उनके पास रियल सीसीटीवी फुटेज है। एंटिसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट में रिजेक्ट हो गई है, अभी इलाहाबाद कोर्ट में है। ऑपोजिशन पार्टी थ्रेटन कर रही है कि वो रेगुलर बेल लोअर कोर्ट में रिजेक्ट करा देंगे। उनको क्या वरी होना चाहिए? अगर हाई कोर्ट, अच्छा, आपको हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है। ओंकार जी, विश्वदीप सिंह जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हायर कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दे दी है तो लोअर कोर्ट उसको कैंसिल नहीं कर सकता है, या तो वही कोर्ट कर सकता है या उस हायर कोर्ट ही उसको कैंसिल कर सकता है। आप निश्चिंत हो जाएं, इस तरह की धमकियां गीदड़ भभकियां हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अमित गुप्ता जी का कुछ सवाल है। मैं पहले सवाल पढ़ देता हूँ। अमित गुप्ता जी का सवाल है कि within approximate 40 days of marriage, my wife became pregnant. Doctor asked her for ultrasound, but instead of that, my wife left our residence of Mumbai and went back to Agra. She threatened for cases and demanded money. Under threat of false cases, my parents gave some money to the mediator. Receipt is with us for this money, but wife demanded more money. Now she has filed 30A and DV from Agra. In 13A, she said she was never pregnant. I have all medical testing report and doctor's report. I have filed 340. She brought expedite order of HC. Now my 340 is pending, but divorce case is expedited. I have filed 406 on mediator from Mumbai for the money which he is not returning to us. So how to know whether the child in 13A, where she says she was not pregnant, can application be filed in 13A for seeking money back which my parents gave? Mediator said. Okay, now it is a long query. So essentially, what Amit is saying, that her wife was pregnant when she left his residence, and now she is denying that she was ever pregnant. But Amit, do you have the medical prescription with that doctor gave, in which he has mentioned that she should undergo ultrasound? If so, then you can also file a counter claim in her divorce petition using 23A of Hindu Marriage Act. There is a provision in Hindu Marriage Act of counter claim. Counter claim is that divorce should be granted on the grounds of the respondent rather than the petitioner. So that is essentially a counter claim, that the claim of the claimant is false. That is, whatever the petitioner is saying is false, and the petitioner is not the aggrieved party. I am the aggrieved party. That is the whole point in counter claim. मैं इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे किसी ने कहा है कि काउंटर क्लेम यह होता है कि पेटिशनर ने जो केस फाइल किया है उसने सच्चे ग्राउंड पे नहीं किया, और वह पार्टी एग्रीव्ड नहीं है, मतलब कि वह ग्रसित पार्टी नहीं है, ग्रसित पार्टी रिस्पोंडेंट है। और जो रिलीफ, जो आदेश, अगर केस सच्चा होता, पेटिशनर को मिलना चाहिए था, वह आदेश अब रिस्पोंडेंट को मिलना चाहिए। और इसके लिए आपको पूरा एक काउंटर क्लेम लिखना पड़ता है और फाइल करना पड़ता है रिप्लाई के साथ। और बाकी रही बात कि क्या आप केस फाइल कर सकते हैं मीडिएटर के खिलाफ और लड़की के खिलाफ। मीडिएटर के खिलाफ आप बिल्कुल केस फाइल कर सकते हैं, पर क्या लड़की के खिलाफ केस बनता है,
जब तक आप ये साबित ना कर दें कि मेडिएटर और लड़की वाले पक्ष की मिलीभगत थी, तब तक आप उनके खिलाफ कोई केस इस ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक दायर नहीं कर सकते, पर फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं उनको पार्टी बनाने का। हरि गुप्ता जी का सवाल है, सर मैं हरि गुप्ता कानपुर से 498 में कॉम्प्रोमाइज हुआ, फिर से साथ रहने लगे, अभी वह केस नहीं हटा रही है। सेक्शन 125 में डीवी एक्ट चल रहे हैं, 125 में अंतरिम आदेश हो गया है, आईओ ने 498 में एफआईआर लगा दी है। हम गुप्ता जी बार बार बहुत अधिक बीवी को वापस लाना चाहिए ऐसी स्थितियों में। बीवी को ऐसी स्थितियों में वापस नहीं लाना चाहिए, और जैसा हरि गुप्ता जी आपने किया, आपने थोड़ा और भी गलत किया, आपने केसेस खत्म हुए बिना ही साथ रहने लगे। तो ऐसी स्थिति में अगर लड़की केस नहीं हटा रही है तो आपको इन केसेस की क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए, और आपको तय करना चाहिए कि क्या आपको इस लड़की के साथ अभी भी रहना है या नहीं रहना है। अगर आपको रहना है तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि उसे केस वापस ले लेना चाहिए, या आपके फैमिली मेंबर्स अगर उस दौरान जब आपका मेडिएशन चल रहा था, आपकी आपसी सहमति बनी थी, तो जो लोग आपके साथ शामिल थे उनकी हेल्प लेनी चाहिए, उनसे मदद लेनी चाहिए कि आप इन केसेस को हटाएं, आप अपनी बीवी को समझाएं कि वो इन केसेस को हटाए। बाकी रही बात, अगर वो नहीं हटा रही है तो डिवोर्स और क्वेश्चन के अलावा कोई चारा इसके अलावा आपके पास बचता नहीं है। डिवोर्स ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी डालें, पर किसी ना किसी स्टेज पे आपको डिवोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। लखवीर चंद शर्मा जी ने कल भी एक सवाल पूछा था, आज इनका एक सवाल है, सर मेरे पास एक बैंक स्टेटमेंट है, जो पैसे मैंने अपनी बीवी और सास को दिए हैं घर छोड़ने से पहले, मैंने उसके अकाउंट में 30,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। 498 में ये डिफेंस में स्ट्रॉन्ग डिफेंस होगा। हाँ, 498 में ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो सकता है लखवीर चंद शर्मा जी। और अगर आपने बार बार उन्हें पैसे दिए हैं तो क्या आपने कोई नोटिस उन्हें भेजा है इस पैसे की वापसी के लिए? बहुत से लोग काउंटर केसेस के बारे में पूछते हैं, आपके पास तो बहुत ही वैलिड ग्राउंड है काउंटर केस करने का, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। तो आपने क्या उनको कोई नोटिस दिया है कि वो जो भी पैसे आपने दिया है वो आपको वापस कर दें? अतुल श्रीवास्तव जी का एक कॉम्प्लीमेंट है, आई एम जस्ट रीडिंग आउट बिकॉज आई लव्ड इट, एंड थैंक यू वेरी मच अतुल जी. Atul has said that, sir, before I ask my question, I want to just share that you are so popular. Even my wife used to ask me that now you have joined Sahodar and Shoni Kapoor group. Now you will be in attacking mode always. I am very thankful, sir. And if that is the case, then everybody should let their wife know that you have joined Sahodar Trust group, and you are on your way to script another success story against gender bias laws. Thank you very much, Atul. Shiva Kumar is from Narsaroipet in Andhra, and his question is that, Sir, Fox 498 I filed in Andhra now agreed to settle with payment of 45 lakhs. What is the specific procedures to close 498 charge sheet not yet filed cases? File date is January 2019. Shiva, if the case has been agreed to be closed, first make an agreement. Then, if it is plain 498A and no other section is included, which is non-compoundable, then in Andhra and Telangana, she can just go to police station, give a statement that 498 should be closed, or if the charge sheet has been filed, she can go to the court and give a statement that she does not want to proceed with 498, and 498 will be closed by the concerned magistrate. But I'm sure that you are paying such a huge amount, so you have made your agreements just and proper. You should be very careful in making agreements when you are paying money to wife for closure of your cases. Suyog Pandey has asked a question, sir.
इनका क्वेश्चन है कि सर 10,000 मेंटेनेंस लगा है पुणे फैमिली कोर्ट से 3 साल पहले, उसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, क्या क्या हम अब मेंटेनेंस रिड्यूस करा सकते हैं? एक बच्ची भी है, बिटिया भी है, बिटिया होने से पहले वह काम कर रही थी। सुयोग जी, अगर वह पहले काम कर रही थी तो आप बिल्कुल एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हालांकि अब ये ग्राउंड नहीं रहा कि लड़की पढ़ी लिखी है तो उसे काम करना ही है और उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसमें आप कम करने के मेंटेनेंस कम करने के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं चेंज इन सर्कमस्टांसेस पे कि नाउ शी हैज कंप्लीटेड हर एजुकेशन और शी शुड ज्वाइन जॉब। यू शुड ऑल्सो आर्ग्यू, आपको ये आर्ग्यू करना चाहिए कि ये पढ़ी लिखी है और कोर्ट इसे डायरेक्ट करे कि लिमिटेड समय के अंदर एक नौकरी ढूंढ ले। बच्चे की मेंटेनेंस देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और कहना चाहिए कि बच्चे की मेंटेनेंस आप देंगे। कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर बच्चे की मेंटेनेंस या के साथ साथ अगर कोर्ट उसे डायरेक्ट कर दे कि वो लिमिटेड समय में 6 महीने 1 साल में नौकरी ढूंढ ले तो आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया होगा। अर्पण सक्सेना ने कल भी कुछ सवाल किए थे, आज उनका सवाल है, इज देयर एनी स्पेसिफिक जजमेंट विच इज रिजेक्ट कंपनसेशन एंड वन टाइम सेक्शन 20 डिमांड? My case demand is equal to 1.33 crore. Arpan, there cannot be any specific judgment which says that compensation has to be provided or that there cannot be any compensation and one time section 20 under section 120 of domestic violence act. See, if you read the definition of section 20, it says that the magistrate can grant one time or monthly compensation. So there is a provision for compensation, and I won't say that nobody ever got it. Of course, if I remember your facts correctly, then she is also working, and there are no medical which is attached. So I doubt that she'll get any compensation at all, let alone 1.33 crore as compensation. So please don't be worried. Fight your cases on merits. Fight your cases on merits. Sumit Nikalji has asked a question which is not clear. Sumit has asked, currently I am having the possession of the flat. Is there any way where I can ask the court to remove her name by paying stamp duty and registration? Sumit, it is not clear who has paid for this particular house. Unless that is clear and there is a court decree about it, I cannot answer this question. Please ask question again with complete facts. Rakesh Sharma has asked a question that currently no FIR is done 23, 377, 354B, 406. Rakesh, first of all, we have to understand where your case is. If the case is in Delhi, the anticipatory bail can be provided, may be provided, or notice bail may be provided before filing of the FIR. Even in Bombay and Bangalore, there are, I have heard that you can get such anticipatory bails. But if the case is in, say, Punjab, Haryana, UP, then you will not get any anticipatory bail with prior to FIR. So only after FIR you should go for anticipatory bail. And now I think anticipatory bail, there is no state which is in which anticipatory bail provisions are not enforceable. So you should move for anticipatory bail in such heinous crimes rather than going for regular bail, because the magistrate can send you to jail or judicial custody for the particular. अमित गुप्ता जिन्होंने पहले सवाल किया था बॉम्बे और आगरा के केसेस के बारे में, उनका फिर से कुछ एडिशन है। उसने कहा है कि वो मुझे बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता रही है, विच इज अ क्रुएल्टी अगेंस्ट मी, हाउ टू गेट हर केस डिसमिस एंड गेट माय 340 आल्सो डिसाइडेड। अमित जी, मैंने एंड यूज जजमेंट ऑफ सैयद नजीम हुसैन बट ड्यू टू एक्सपायरी डेट ऑर्डर, और उन्होंने सैयद नजीम हुसैन का ऑर्डर यूज किया है। अमित जी, आपके जो भी सवाल हैं
पहले तो मैं उसमें ये बता दूं कि उसका केस डिसमिस होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि क्या उसने एक गर्भपात करवाया है या नहीं करवाया है। उसने केस जब डाला होगा तो सिर्फ ये एक इंसिडेंट नहीं होगा, ये आपके तरफ का पक्ष है। उसने किन ग्राउंड्स पे केस डाला है, आपको उन्हें झूठा साबित करना होगा। अगर उसने ये डिनाई किया है कि बच्चा वो कभी गर्भवती थी नहीं और आपके पास कोई कागज हैं, तभी आपने 340 लगाया होगा और 340 अपने हिसाब से डिसाइड होगा। कोर्ट के पास, कोर्ट को आप बाइंड नहीं कर सकते हैं। इवन सैयद नजीम हुसैन वाला जो आपने केस लॉ यूज किया है, वो भी बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है। उसमें भी सिर्फ उस पर्टिकुलर केस के लिए कहा गया था कि इस केस में मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो पहले 340 का निवारण करे और निपटारा करे। तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है। मजिस्ट्रेट और कोई भी फैमिली कोर्ट का जज डिसाइड कर सकता है कि वो 340 की एप्लीकेशन को कब डिसाइड करेगा। आपको चाहिए, मैं अभी भी आपको फिर से यही सलाह दूंगा कि आपको काउंटर क्लेम ही फाइल करना चाहिए इसमें, अगर आपको उसका केस डिसमिस कराना है तो। इसके अलावा जब तक मुझे उसके केस के फैक्ट्स नहीं मालूम होंगे कि उसने क्या लिखा है, मैं इसके बारे में कोई राय नहीं दे पाऊंगा। हरीश शर्मा जी का सवाल है, सर शेयर्ड हाउस होल्ड के ऑर्डर से कैसे बचा जाए, कोर्ट बोल रहे हैं रेंट पर दो। हरीश जी, मैंने एक अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो इसके बारे में अपनी यूट्यूब चैनल पे डाला है कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है, उसके ऑर्डर्स किन किन वजहों से इन्फोर्सेबल या नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप वो वीडियो पूरा देख लें। उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल हो तो मुझे यह जानना इसमें है कि लड़की कमा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। Manda Shyam Prasad has asked a question. My wife went Australia without telling to me. Upon RCR, she came and kept phone and she is not in India. See, Manda Shyam Prasad ji, whether wife is staying in India or not staying in India, that is not a ground of divorce. The divorce is granted on the grounds on which divorce is filed, whether it is cruelty, desertion, adultery, mental illness. So these are the grounds of divorce. Of course, whether the respondent is in India or not in India is not a factor which can bind the court or which can be any decision making point for the court. You can get divorce even if the respondent is not staying in India, and for 98A, as it has been filed, it has to be contested. PS न्यूज फॉर लीगल हेल्प स्क्रीन नेम, उनका एक सवाल है, सर इनिशियल स्टेज पर 340 फाइल कर सकते हैं क्या? if I have documentary evidence that she is working, बिल्कुल श्रीमान, आप इनिशियल स्टेज पर भी 340 फाइल कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है कि लड़की काम कर रही है और लड़की का ये कथन है कि वह काम नहीं कर रही है और मेंटेनेंस मांग रही है झूठे ग्राउंड पे, तो आप इनिशियल स्टेज पर भी 340 की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। नीरज वर्मा जी का एक सवाल है कि जब उनकी बीवी घर छोड़ के जा रही थी तो उस दिन उन्होंने 4,000 रुपए का एक बियरर चेक इन्हें दिया था, जो कि बैंक से क्लियर हो गया है। क्या डीवी और 498 में ये डॉवरी डिमांड मानी जा सकती है? नीरज जी, अगर बहुत ही सिर्फ यही पॉइंट है, 4,000 रुपए तो इस बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला। ये एक झूठा प्रूफ बनाने का ही मैं इसको कहूंगा। 4,000 रुपए की आज के दौर में 4,000 रुपए के दहेज की डिमांड करेगा। हाँ, यह कहने के बाद भी अगर आप लगातार उससे पैसे लेते रहे हैं तो एक सीरीज ऑफ इस तरह के चेक जरूर इंसिडेंट बन सकते हैं जिसमें ये कहा जाए कि एक डॉवरी की डिमांड लगातार होती रही है। युवराज बारी का सवाल नहीं है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि वह जलगांव से रहने वाले हैं, या हो सकता है नीचे सवाल भी हो।
Sumit Pratap Singh has a question. If for 125 petition and FIR says that some amount was deposited and some cash was given as dowry in account of the accused, should we file DP3 or any other step? Sumit Pratap Singh ji, I have categorically said in my meetings, and I'll repeat here also, I have no faith in filing DP3. Though there are a couple of one or two success stories of DP3 which keep on resurfacing in social media time and again, but they are only of the registration of FIR. Nobody knows what has happened to those FIRs thereafter. To the best of my knowledge, none of them has resulted in any conviction, and there is no basis to say that settlements have happened because of DP3. That is not in my personal knowledge. So I have never suggested anybody to file DP3. Uh, though in the initial stage when my cases were going on, I myself also abandoned my efforts when I realized that it is not going to help my case. Uh, GT has asked a question that my wife was 7 months pregnant, is 7 months pregnant, and her at her home. Now she want to claim pregnancy bills in lakhs, which I cannot afford. How can I save myself from paying this huge bill? Still no case complaint from both sides. So GT, unless the court decides, and court will decide whatever the pregnancy bills are there based on the financial capabilities of both the families. So if your financial capabilities are of government hospital, they'll direct you to give government hospital kind of charges. If your capacity is considered to be very high, the court may order you to bear certain expenses. But I doubt that pregnancy related expenses can run in lakhs. So please don't be worried. The girls, when they normally want 5,000 rupees, they'll demand 5 lakh rupees or 50,000 rupees so that they can get this much amount. So please डोंट वरी अबाउट इट। नरेश कुमार जी का एक सवाल है, नमस्कार सर, क्या 498 प्लस 377 में अग्रिम जमानत मिल सकती है? नरेश जी, बिल्कुल मिल सकती है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि 498 ए और 377 कॉम्बिनेशन में एंटीसिपेटरी बेल ना मिले। अब तो ऑलमोस्ट हर एक 498 ए के केस के साथ 377 लग के ही आती है, और अधिकतर केसेस के अंदर मैंने यह पाया है या देखा है कि कोर्ट, प्लीज डोंट बी वरीड अबाउट दिस थिंग। आप इसके बारे में निश्चिंत रहें, आप अपने केस को मेरिट्स पे लड़े, अप्रोप्रिएट टाइम पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करें। भारत जी का सवाल है, द क्वेश्चन, द नेम इज भारत, नॉट भरत। while granting IM interim maintenance in DV case, court will consider my current salary which I am getting since last 2-3 months of salary I used to get while wife was residing with me. Current salary is 10x times less. So Bharat, in this case, the court will see to it that it is an effort to hide your actual salary, actual income, because nobody stands to lose 90% of the salary in just immediately after the case has been filed. In fact, in Kusum Sharma judgment, one of the reasons Kusum Sharma judgment came was that to ascertain how assets of a husband and his family can be depleted immediately after filing the cases, whether the depletion has been gradual or it has been all of a sudden. If it is a sudden decrease, then the courts don't consider that decrease at all and decide maintenance on the last drawn last salary which was drawn when the girl was staying with you. So please, I am sure you should have your valid reasons why your salary is so less at this point of time, which has to be declared in the court. PS न्यूज फॉर लीगल हेल्प हैज, आपने वही सवाल दोबारा किया है एंड आई हैव आल्सो ऑलरेडी आंसर्ड। UV Tech W has asked a question.
In case divorce filed by husband granted due to non-appearance of spouse or her counsel ever, and can 125 be contested by wife, and what grounds are considered for granting maintenance? Uvitek, I have today morning only posted an article, rather not an article, it is a video on YouTube, and the article is available on my uh, website www.shonikapoor.com, in which I have gone through the questions or similar questions which you have asked. So, if divorce has been granted in the favor of a husband and against the wife, then in these cases, either woman is generally not granted any maintenance or granted very limited maintenance. It also depends how you present the facts in the court, because in your case, the girl has accepted the decree of divorce and not challenged it as yet. I am sure that you will have to pay very minimal maintenance, if at all. Still, you should file a very spirited response in this. Uh, Sandeep Rana has a question, sir. Any tips on how to lead cross examination in 498A? Sandeep Rana ji, I have already answered this question. For 125, cross examination happens on factual grounds. In fact, every case has two aspects. One is a factual ground and the factual metric, the other is a legal metrics. So, factual grounds nobody can answer without knowing your particular case. It has to be based on your particular case. Though there is an article which is available on my website, which is originally written by Hardik Bhai uh, from UK, and it is a very exhaustive article. You should read that article. It is called Unlocking Evidence. Please read that article. Then, if you have any specific query, you can ask us in subsequent YouTube live, or if you are in Delhi, please come to weekly meetings after lockdown as and when they start with all your queries, and we'll try to answer that. Charanjit Singh has a question. Can DVB request if DIR is in my favor? Yes, Charanjit Singh, if the DIR is in your favor, in that case, you should file a response and try to close the case within the magistrate court itself. However, DIR is one of the aspects of DV. One should try his luck in High Court also if trial court does not listen to you. Harmeet Narula has a question. Uh, Harmeet Narula has a question. Will she be entitled for monthly amount as the case is in Delhi and started in February 2020? Worst case scenario, how much time it will take for judge to grant any amount in case applicable? Uh, Harmeet ji, whether she'll be entitled for any maintenance is dependent upon the factual metrics of your case. Whether she is earning, she is not earning, how much you are earning, how much is the amount she is claiming, whether she is living in adultery, whether she is not living in adultery, whether she has enough assets of her own. So these are the some of the grounds. And interim maintenance can take anywhere between 3 months to a year in Delhi on an average. So there is no fixed time limit, but I have seen that it can take anywhere between this amount of time. PS News and Legal Help has asked the same question. Please be patient. Uh, it is a request to everybody. Please don't repeat the question. I start taking questions from up to down, and I'll take your question when I come to it. I don't want to skip any question unless there is a technical glitch and few questions are skipped. Otherwise, I generally don't skip any questions. So please be patient and don't write same question again and again. It saves time for yourself as well as other people. Of course, I understand that we are very new to this kind of YouTube meetings. It is not a weekly meeting which is happening in the park or somewhere else. So there are challenges. Please bear with these challenges as everybody else is bearing with them. Vishwadeep Singh has also repeated his question, so I'm skipping it.
Chaitanya Singh has asked me a question: can salary details of working wife be obtained? Every time PIO stated third party information could not be given, what to do? Chaitanya, there is a mechanism where you can get this information in court. It can be done using CRPC 91 if the case is of criminal nature. It can be done by using witness summons if the case is of civil nature. So, salary can be obtained, the salary details can be called in the court. Of course, if PAIO has rejected your RTA application, then you can go in for first appeal or second appeal. Or also, there are instances where this information is provided by any government organization or government aided organization. A way which I have found and I would like to discuss about RTI, where you are seeking information, you should not seek information about any particular person. You should always seek information that how many people are working in this department and what emoluments they are getting. So only basis whether she is working or not, that is sufficient ground for getting any information to the court. So that is there is a tweak we should have in RTI how we file our RTI application. Darsh Yadav has again repeated his question, so I'm not answering it. I'm skipping it. PS News has the question again, and I am coming down. Amber has asked me a question. Husband filed divorce under cruelty. Wife filed 498 in retaliation. Husband left home fearing life. Now wife not leaving husband's house, which is on his name only. How to get possession back from wife? Amber, in this case, the case will a civil case has to be filed for the possession of the house, and it may take some time before you get the possession of the house. Siddiq, please. So there can be considerable time before the possession of the house can be granted to the husband, and dare I say it may only happen after divorce, because in husband's house wife has right of residence. Neeraj Verma has asked a question that why first filed 125, and after I came to know that she has also filed HMA 13, what should I do in my 125 and divorce which is running? Neeraj ji, in both the cases you have to file a reply. Unless you file a reply, the cases would be proceeded ex parte, and if the cases proceed ex parte, you will be the ultimate sufferer, because the court will grant her certain reliefs, which I am sure you will find it hard to adjust to. So please don't leave these cases unattended and file appropriate replies to these petitions, to these applications. Shekhar Kumar has asked a question: what will happen if not paying maintenance during COVID-19 in domestic violence? Shekhar Kumar, it all depends upon what kind of pressure you are yourself in. If you are not getting any salary, I am sure the court will consider this ground. If you are not, you are self-employed and there are challenges to your income, I am sure whenever she files execution petition, the court will understand your situation also, because in execution petitions also the courts consider that whether the default is willful or not. And COVID-19 is one of such circumstances, pandemic circumstances, which happens once, maybe once in a century. I am 46 years of age, and I have never seen such a lockdown ever in my life. I have seen curfews, but no curfew I have seen which runs this long. So I am sure that if you have valid grounds, if your income is impacted due to COVID-19, the court will consider this ground. However, if there is no uh, hitch in your income, or there is no dip in your income, then of course court will insist that you should pay all the amount which is due. I am PS News for legal help. Sir, please, I request that you
have actually spammed the timeline by asking and repeating the same question time and again. Please don't do it. It gets very difficult to find questions for to answer. Uh, Jitin Svita has asked a question. Uh, Jitin, it is okay. I wanted to understand whether you are a male or a female. Your question now is very clear. His question is that, hello sir, my DV case is filed last year. For FIR for 498 also registered last year, but charge sheet not filed yet by opposition. Is there any time duration for IU to file charge sheet? Jitin, it all depends in which case, in which state the case is in. In Delhi, normally the charge sheet, the time required or given to police for filing charge sheet is up to 3 years. In Haryana, I have seen that normally charge sheets are filed in 1.5 to 2 years. In UP, unless a person has obtained stay on arrest or anticipatory bail, the court does not, the police does not file any charge sheet. So please be patient. There is no hurry. R.S. Thakur has a very interesting question, and I like to take it. Okay, we can take it right now because there is still some 9 minutes left. R.S. Thakur has a question. Please put some light on jurisdiction of 498. So, as we know that till last year, the jurisdiction of 498A was where the cruelty has actually happened. In 2018, Supreme Court came out with a judgment which said that the place where the woman has sought refuge after facing cruelty from the husband and in-laws can also be a place of jurisdiction of 498A. This said, now we have seen cases where the girl, though was living in city A, now is staying in city B because of her allegations that in city A she was harassed, has filed cases in city C. So in these cases, city C has no jurisdiction. So I'll explain it. Supposedly, a woman having a marital home in Delhi, अगर एक लड़की का ससुराल दिल्ली में है, उसका ये कहना है कि उसके साथ क्रूरता दहेज से रिलेटेड दिल्ली के अंदर हुई है और वो अपने उसका मायका पंजाब में है, वो पंजाब चली जाती है, तो वो केस कलकत्ता में नहीं फाइल कर सकती। तो या तो केस पंजाब में फाइल होगा या दिल्ली में फाइल होगा। तो ज्यूरिसडिक्शन को लेके थोड़े कंफ्यूजन के सवाल इस तरह के आते रहते हैं, जहाँ पे लड़की नौकरी करने के लिए एक शहर में रह रही है, वो अपने मायके में जाके केस फाइल कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसका ये कतई मकसद नहीं था ये कहना कि लड़की की जहां भी सुविधा हो वहीं केस फाइल कर ले। तो ज्यूरिसडिक्शन थोड़ा सा ट्वीक्ड है। समझने की बात यह है कि क्या लड़की के साथ जहां क्रूरता हुई है और अब वो जो जहां रह रही है, क्या वो जगह एक है या नहीं है, या जहां उसने आश्रय लिया है क्या यह वही जगह है जहां पे उसने केस फाइल किया है। और इस तरह के केसेस को बड़ा स्ट्रांगली लड़ना चाहिए। मेरा यह मानना है कि किसी ना किसी समय इसमें और क्लैरिफिकेशन की जरूरत के लिए किसी ना किसी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, अफेक्टेड पार्टी को, जिससे कि ये चीज क्लियर हो सके और ये जो अपने मन मुताबिक केस करने की एक परंपरा से चल पड़ी है, उसको रोका जा सके। आजकल जो केसेस फाइल हो रहे हैं वो कहीं भी जहां भी लड़की को सुविधा होती है वहां पे केस फाइल करना शुरू कर देती है। ठीक है जी। और I am sorry, PS News, for legal help. Whosoever you are, you have actually spoiled the timeline, asking the same question again and again and again. I am very sorry. This is something which should not be done. Atul Srivastava has a question which says that in section 9, wife never appeared in last 2 years. How can I take benefit of it?
Atul, if the wife has not appeared in last 2 years, why you have not got ex parte decree till now? What are you doing? Is your wife served with the notice of Section 9 or not? Have you made sure that the wife is served and she is not appearing? Share market, a person having share market as screen name has asked a question how to fight Section 354, which my brother's wife has put on me along with 498 on entire family. Again, share market, there can be limited general guidance on this particular aspect. 354 354 is only about molestation or outraging the modesty of a woman, and modesty of a woman is considered to come from her feminine aspect, that is her body. So the general, I don't know what are the allegations on you. If you could uh, give me more details, I'll try to help you further on this. I believe we are left with only 2-3 minutes, and I wanted to convey a few things. I'll take this time. Uh, Thank you very much for joining us on YouTube Live, and which is an extension of Sahodar weekly meetings. I have got a lot of SMS, WhatsApp messages, as well as emails about this initiative. I thank all of you. It is not possible for me to reply to all these messages. I thank from the core of my heart for all the love which I get from you people. Uh, so other meetings has not gone online solely. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग क्या करेंगे, लॉकडाउन तक हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे या नहीं करेंगे ये उस समय तय करेंगे। हो सकता है जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है हम ये मीटिंग्स कंटिन्यू करें। इसके अलावा भी हमारे नेटवर्क पे हमारे वॉलंटियर्स लॉकडाउन में भी 9811850498 पर व्हाट्सएप हेल्प दे रहे हैं। आप नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9811850498। अगर आप इस पर अपनी मुश्किल, अपनी समस्या लिखकर भेजेंगे व्हाट्सएप के द्वारा, तो आपको उस पर जवाब दिया जाएगा। यह कॉलिंग नंबर नहीं है, यह मैन नंबर नहीं है, इस पे हर समय कोई बैठा नहीं होता है जो आपके फ़ोन को आंसर करे, पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो इसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। साउदर वीकली मीटिंग्स दिल्ली में लॉकडाउन के बाद दोबारा से शुरू होंगी। क्या हम ऑनलाइन मीटिंग लॉकडाउन में और करेंगे या लॉकडाउन के बाद करते रहेंगे, हम इसके बारे में आप सबको ज़रूर बताएंगे। कुछ सजेशन ये भी आए थे कि एक ही मीटिंग में हर तरह के सवाल लेना शायद इतना अच्छा नहीं है। ऑनलाइन मैकेनिज्म में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम एक टॉपिक के ऊपर सवाल लें। तो मैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी अपडेट होगा जनरली वो मैं अपने ट्विटर फीड पे देता हूँ, या मेरे फ़ोन में जो साउदर का फ़ोन है और मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप स्टेटस मैसेज में भी मैं लिखता हूँ। इस चीज़ के लिए सबको व्हाट्सएप करना स्पैमिंग हो जाएगा, तो हम व्हाट्सएप जनरली नहीं करते हैं सबको, बट इन दो फोरम पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप छोटी मोटी डिस्कशन के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन पर जनरली वॉलंटियर्स जो हैं व्हाट्सएप पे ही जवाब देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप उनके कंप्यूटर्स पे फीडेड है, वहाँ से जवाब देना आसान है। जिस इंसान के पास हाथ में मोबाइल फ़ोन है उसके पास व्हाट्सएप नहीं है, तो उसे ये मत कहिए मैंने अभी आपको ये व्हाट्सएप किया है। समय ख़त्म हो रहा है। आप सबका धन्यवाद। अगली मीटिंग के बारे में आपको जल्दी सूचना दी जाएगी। आपको अगर मेरा यह इनिशिएटिव पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और बाकी विक्टिम्स को भी पता चल सके कि इस तरह का एक इनिशिएटिव साउदर इंडिया ने शुरू किया है। तो समय समाप्त है दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद है मैं आपसे दोबारा जल्द मिलूंगा। धन्यवाद।